A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 5 of your book, Political Theory. The name of the chapter is Rights. Under and our today's topic is rights and responsibilities. In our previous class, we discussed about the kinds of rights. Like we have three kinds of rights: political rights, economic rights, and cultural rights. And government plays a very crucial role in fulfilling these rights of ours. Okay, so the most important one is the economical right. Okay, why? Because if someone's basic needs is not fulfilling, then he or she is not interested in gaining their own gaining or want the political rights. Okay, so economic rights, after that cultural rights, and after that political rights. So now these are the three types of rights, and now our today's topic, rights and responsibilities. So class, we have some responsibilities too. We have, everybody is talking about rights, like we have this right, we have fundamental rights, etc etc, but हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है. ठीक है, हम राइट्स को तो क्लेम कर देते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई बात नहीं करता है. तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, राइट्स के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी सोसाइटी को लेके, हमारे कस्टम को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे हमारे नेशन को लेके. ओके, so rights not only place obligations upon the state to act in a certain way, for instance to ensure sustainable development, but they also place obligations upon each of us. Okay, so now rights, ऐसा नहीं है कि rights only state या government को like ऑब्लिगेट कर रही है कुछ सर्टेन प्रोसेस के थ्रू कि आप ये नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सो यू कांट deal with them in this way or something like that. But sometimes, जैसे कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सो for sustainable development, to ensure sustainable development, it is the duty of the state to place some obligations upon each of us, like कि वो क्या कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, कि आप पेड़ नहीं काट सकते हो. ठीक है, ये क्या कर रही है स्टेट, ऑब्लिगेशन कर रही है ना कि नहीं, दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज इलीगल if you cut a tree, right? Why? Because जो environment की बात हो रही है यहाँ पे, nature की बात हो रही है. So how they what are some of our responsibilities, how they oblige us? Firstly, they compel us to think not just for your own personal needs and interests, but to defend some things as being good for all of us. Okay, so firstly they compel us. Firstly they force us. Compel means to force. Firstly they force us to think, like it is not always for our selfishness or for our own personal needs and interests, but sometimes we have to do things for the society, for the goodness of everybody, for the goodness of everyone. For example, like protecting the ozone layer, minimizing air and water pollution, maintaining the green cover by planting new trees, and preventing cutting down of forests, maintaining the ecological balance are things that are essential for all of us. Obviously, all these things are important for us. If they are not protecting, if state will not help us to protect our ozone layer, then what will happen? What will happen? Global warming, और बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी विल इनहेल polluted air. Okay, जो वाटर पोल्यूशन है, वी विल ड्रिंक dirty water and it will harm us. ठीक है, क्या होगा? हम अगर गंदी एयर अगर
जो है अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो वो हमें ही क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, सो मेंटेनिंग द ग्रीन कवर लाइक प्लांटिंग करना, एफॉरेस्टेशन करना, इट इज गुड फॉर अस। अगर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट फ्रेश एयर, वी विल गेट ऑक्सीजन, राइट, and it is essential for our living is oxygen. Preventing cutting down of forest because food हो गया, मेडिसिन हो गई, इवन ऑक्सीजन हो गया, भी all of these things we are getting from the forest, from the trees only. And even to maintain the ecological balance of animals, birds और बहुत सारे living beings जो है वो forest पे depend है. So whatever things are essential for us, it is like it is our responsibility to maintain them, to respect them, and it is it is the government who make us do these things. Okay, not for our personal needs but for the goodness of the society. So they represent the common good that we must act to protect for ourselves as well as for the future generation who are not entitled to inherit a safe and clean world without which they cannot lead a reasonably good life. Okay, so this is for the common good. They represent the common good. हम society के अच्छाई के लिए, ये common goodness है ना, कि हम सबको, यहाँ पे फाल्गुनी है, पलक है, राघव है, ठीक है, रानू, सौम्या, तनिष्का, जितने भी आप लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए क्या है, इट इज एसेंशियल कि प्लांट्स का होना, अच्छी एयर का होना, वाटर, क्लीन वाटर का होना, ठीक है, आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. तो इट इज फॉर द कॉमन गुड. अगर हम इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल it will lead to the future generation. Our future generation will not lead a good life. They will not feel safe, they will not get the clean world, and obviously they will not, they cannot lead a reasonably good life if we are not focusing on these things today. So first thing, firstly समझ आया what is our responsibility, some obligations are there for the common goodness. Now the secondly, they require that I respect the rights of others. If I say that I must be given the right to express my views, I must also grant the same right to others. If I do not want others to interfere in the choices I make, the dress I wear, or the music I listen to, I must refrain from interfering the choices that others make. I must leave them free to choose their music and clothes. I cannot use the right to free speech to incite a crowd to kill my neighbor. In exercising my rights, I cannot deprive others of their rights. My rights are, in other words, limited by the principle of equal and same rights for all. Obviously, so like I respect the rights of others. ठीक है, we should respect the rights of others. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि like nobody is like कोई हमारे पर्सनल मैटर्स में या मेरे ओपिनियंस में, व्यू पॉइंट्स में इंटरफेयर ना करे, तो वी शुड ग्रांट द सेम राइट टू द अदर्स आल्सो. ऐसा नहीं है हम अपने लिए तो चाहते हैं कि नहीं, मैं जो ड्रेस पहनना चाहता हूँ मुझे पहनना है, मैं जो म्यूजिक सुनना चाहता हूँ मैं सुनूंगा, और हम दूसरों को बोल रहे हैं नहीं आप उसको ऑब्लाइज करो ना, यू हैव टू डू दिस थिंग, यू हैव टू वेयर दिस क्लोथ, यू हैव टू लिसन टू दिस म्यूजिक एक्सेट्रा. तो अगर if I don't want anybody to interfere in my choices, interfere in my viewpoints, then I should also give them the same right which I have with me, right? So I must refrain from interfering in the choices that other makes. We should not refrain them. Obviously हम जो choices हैं हम उनको उनके choices में interfere करने का हमारे पास भी right नहीं है. If I don't want anybody to interfere in my life, then they too don't want their life to be interfered. Okay, so now there is I cannot use the right to free speech. We all have this right to speech, but it doesn't mean like we can incite or we can encourage a crowd to kill my neighbor or kill the person
which I don't like, right? तो मैं इंसाइट या encourage, इंसाइट मतलब होता है encourage करना, मैं उनको इंसाइट नहीं कर सकती या encourage नहीं कर सकती कि I don't like this person and I have this right to speech and I am like encouraging crowds, I am encouraging people to kill this person. No, I can't use this, I can't encourage the crowd. Okay, so in exercising my rights I cannot deprive others of their right. ठीक है, अब हम अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए हम दूसरों के राइट्स को उनसे नहीं छीन सकते हैं. So my rights, in other words, limited by the principle of equal and the same rights of all. जो rights हमारे हैं, जो equality हमारे पास है, वो same rights और वो same equality क्या है, दूसरों के पास भी है, and we should respect them and we should respect the rights of others. Okay, so this is the second. So now there is a box, unni munni is there. Now just look at this, what they are talking about. Did you see the latest sting operation on TV yesterday? I couldn't believe the conversation between the hotshot official and the famous actress. That was cheap sensationalism. Sensationalism means TRP सुना होगा कि ठीक है, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई प्रोसेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं sensationalism. Besides, it was an infringement of their right to privacy. Now this person, this Unni is saying कि लाइक अब तुमने क्या लेटेस्ट ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन देखा कि टीवी में, तो नाउ ही सेइंग कि आई कुडंट बिलीव कि जो ऑफिशियल और फेमस एक्ट्रेस के बारे में जो बताया जा रहा है वो सही है. तो नाउ वो बोल रहे हैं कि ये एक टीआरपी है, एक टीआरपी स्टंट था, ठीक है, और ये इन्फ्रिंजमेंट, इट वाज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी. इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि उनका जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या हो रहा है, इसमें वायलेट हो रहा है. तो ऐसा प्रोसेस नहीं करना चाहिए. ये this is the violation of their rights. Okay, so like यहाँ पे यही बताया गया है कि we should respect the rights of others also. So now the thirdly is, firstly हो गया common goodness के लिए कि government or state grant some obligations upon us for the common goodness. Secondly, we should respect the rights of others as we all have this equal and same rights. Okay, now the thirdly, we must balance our rights when they come into conflict. For instance, my right to freedom of expression allows me to take pictures. However, if I take pictures of a person bathing in his house without his consent and post them on the internet, that would be a violation of his right to privacy. Now, third right is or you can say third responsibility of our is like we must balance our rights. ठीक है, कि हमारे राइट्स कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, हाउ, जैसे कि एक है, यू हैव दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज अस टू टेक पिक्चर्स. बट if someone is taking shower and like वो हम उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो it is not to what we are doing, we are violating his right to privacy. हम उसका right to privacy भी violate कर रहे हैं. तो we should balance our right. ठीक है, जो भी हमारे rights हैं उसको हमें बैलेंस करना है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये राइट है तो हम कुछ भी कर रहे हैं. वी हैव दिस राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, और इसके चलते में हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन का राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं. नो. Okay, now the fourth one is citizens must be vigilant about limitations which may be placed on their rights. So fourthly, citizens must be vigilant. Citizens must be careful. They must be observant about limitations which may be placed on their rights. कि जो भी limitations
आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, जो भी राइट्स हैं आपके, उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टू एक्सप्रेशन है, और इसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो। नो, वी हैव टू विजिलेंट अबाउट दैट एक्सप्रेशन। ओके, a currently debated topic concerns the increased restrictions which may government are imposing on the civil liberties of citizens on the grounds of national security. Protecting national security may be defended as necessary for safeguarding the rights as and well-beings of citizens. Now, sometimes what happened? Take a recent example of like this pandemic situation. इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्टेट ने, गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सी जो हमारी राइट्स हैं, लिबर्टीज हैं, उन पे इम्पोजिशन लगा दिया था। व्हाई? फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज अगर अब बहुत सारी कंट्रीज से लाइक आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा रहे हो, सिविल लिबर्टी पे इम्पोज कर दिया गया था। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इट इज हार्मफुल। अब हार्मफुल है, हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दैट्स व्हाई दे imposed some restrictions on the liberties which we have. Okay, for the national security. So protecting national security may be defended. Why? अगर national security नहीं है, safeguard नहीं है, तो हमारे rights और हमारी जो well-being है citizens की, उसको हम safeguard नहीं कर पाएंगे। But at what point could the restrictions imposed as necessary for security themselves become a threat to the rights of people? Should a country facing the threat of terrorist bombings be allowed to curtail the liberty of citizens? Should it allowed to arrest people on mere suspicion? Should it allowed to intercept their mail or tap their phones? Should it be allowed to use torture to extract confession? So these are like some of the questions arise and debated in our parliament to debate. These are the hot topics कि like national security के लिए आप किसी को like आपको थोड़ा सा भी सस्पेशन है, थोड़ा सा भी शक है, क्या आप उसको अरेस्ट कर लोगे? आप उनके फोन टैप्स कर लोगे? क्या आप उनको टॉर्चर करोगे? तो these are like some of the debated topics. So in such a situation, the question to ask is whether the person concerned poses an imminent threat to society. सबसे important question जब आप इस टाइम पे क्या पूछेंगे कि जो भी पर्सन है जिसका भी हम फोन टैप कर रहे हैं या हमें किसी पे शक है, क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है? Even arrested person should be allowed legal counsel and the opportunity to present their case before a magistrate or a court of law. So ये बहुत important right है individual का। अगर कोई arrested person है, उसे भी legal rights है कि he or she can present themselves, themselves to the court. ठीक है, अपने मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को प्रेजेंट करें, उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। We need to be extremely cautious about giving governments powers which could be used to curtail the civil liberties of individual, for such powers can be misused. So गवर्नमेंट को भी हमें ये राइट देते हुए क्या है, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि सिविल लिबर्टीज जो है इंडिविजुअल्स की मे बी समटाइम्स व्हाट हैपेंड मिसयूज भी हो सकती है। Government can become authoritarian and undermine the very reason for which governments exist. Sometimes government क्या हो जाती है, बहुत अथॉरिटेरियन हो जाती है, arbitrarily behave करने लग जाती है, and even they give the silly reasons कि हम इसलिए ये कर रहे हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं। So namely the well-being of the members of the states की सबसे बड़ा यही है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा रीजन यही देती है कि this is just for the well-being of the citizens, we are imposing these things. Okay, sometimes it happens. So hence, even though rights can never be absolute, we need to be vigilant in protecting our rights and those of others, for they form the basis of a democratic society. So we should be vigilant. We should be vigilant. We need to be vigilant. We need to be careful, very observant about protecting our rights, for giving concern to the concern
giving consent to the government about our rights, because as we all living in a democratic society, like we should be vigilant about it. We all have these rights, we are free here, but we should vigilant about it. Okay, so class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. In our next class, we will discuss about Universal Declaration of Human Rights. Okay, we will discuss about this paragraph, and after that, your chapter will be finished.